पढ़िया अजैब में पल्ला गुरु दा, पढ़िया अजैब में पल्ला गुरु दा, चले शीश नवाइए जी हमें पाल गुरु, चले शीश नवाइए जी हमें पाल गुरु, तेरा नाम चाहिए जी हमें पाल गुरु, तेरा नाम चाहिए जी हमें पाल गुरु, तेरा नाम चाहिए जी हमें पाल गुरु। राधा स्वामी। Page 40. स्वामी जी महाराज जी के माता पिता आगरा में पन्नी गली में रहते थे। Swami ji Maharaj's parents, they used to stay in Agra in Panni Gali.
बहुत छोटा गली था, वहीं पे उनके 2 महले के बंगले थे और स्वामी जी महाराज वहीं पैदा हुए थे। इनकी माता और घर के लोग पहले तुलसी साहब जी इनके घर में आया करते थे। So Panni Gali was a very thin lane, and they had two mansions in that lane. Swamiji Maharaj was also born there in those mansions, and the family members used to keep going to Tulsi Sahib. तुलसी साहब इनके माता पिता उनके शिष्य थे, घर में 15 दिन महीने में एक बार आया करते थे। तो माताएं बड़ी सेवा करती थी। इनकी माता जी बहुत प्रेमिन थी और भक्ति भाव उनके अंदर ज्यादा था। Tulsi Sahib also used to come and visit their house, and he would come once in a fortnight or a month and visit them. Swamiji Maharaj's mother, she was a devotee of Tulsi Sahib, and she would always look forward to seeing him and attend to him. तो जैसे उत्तर भारत में गर्मी बहुत पड़ती है और शहरों में तो और भी ज्यादा, तो औरतें जो हैं कॉटन का साड़ी पहनते हैं, मोटी मोटी। पहले के लोग कॉटन की साड़ी पहनते थे और जब वो पसीना सब सोखते रहता था, तो अकस्मात एक दिन तुलसी साहब और गिरधारी, उनका एक मुख्य शिष्य, दोनों साथ में आए। तो इन बेबियों को पता लगा कि महाराज घर में आ गए हैं, तो ये जैसे ही काम कर रहे थे वैसे ही छोड़ के भागी भागी गई, नमस्कार करने लगी। So they used to wear cotton saris, and it was summer months, so the cotton would absorb a lot of sweat, and they used to wear these and work. So once it so happened that Tulsi Sahib, along with one of his key devotees, Girdhari, uh, they both visited Swamiji Maharaj's house. And when the word spread that they have reached, all the ladies, uh, they wanted to go and take darshan of Tulsi Sahib. So they all gathered to take darshan. तो गिरधारी गुस्सा करने लगा, ए बेबियों दूर हटो, तुमको मालूम नहीं तुम्हारे कपड़े से इतना दुर्गंध आ रहा है और तुम जो है पैर छू रहे हैं, दूर हटो बोल के गुस्सा किया। तो स्वामी जी महाराज अपना तुलसी साहब जी कहते हैं, क्यों गिरधारी, तुमको इनके कपड़े से बू तो आती है और तुम्हें इनकी भक्ति का सुगंध नहीं आता क्या, इनका प्रेम का सुगंध नहीं आता? So they all had left their work, and like that, they went to take the blessings of Tulsi Sahib. When they went there, Girdhari, he asked all of them to keep a distance because all of their saris were stinking with sweat. So he told them to stay away because all of them were stinking. Then Tulsi Sahib told Girdhari that you are able to smell the sweat and the stink of all their saris, but you are not able to smell the fragrance of the love of their devotion. तब वो गिरधारी चुप हो गया। कहते हैं तो बाद में महाराज ने कहा कि आपके घर एक बनी बनाई आत्मा आने वाली है और आगे दुनिया में उसका नाम होगा। And then Girdhari kept quiet. He didn't say anything. And the Tulsi Sahib then told them that a ready soul will be coming into your household who will become very famous on this and known for this for Santmat. उन्हीं के आशीर्वाद से स्वामी जी महाराज जी का जन्म हुआ था। लेकिन स्वामी जी महाराज बचपन से भक्ति के रंग में रंगे थे और 6 साल की उम्र में उन्होंने स्वामी जी को नामदान दे दिया। So Swamiji Maharaj was born with the blessings of Tulsi Sahib, with the grace of Tulsi Sahib,
and from a very young age he was very devoted, and he was initiated at the age of 6. तो बाद में वो 6 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक एक अंधेरी कोठरी में भजन में बैठे थे, एक रोटी खा के। So from the age of 6 to 18, he was uh, he was sitting in a dark room doing meditation. He used to only eat one roti in a day. उनके पिताजी बड़े संपन्न परिवार से आते थे। वो बिल्डरों को, कंपनी फैक्ट्री वालों को कर्जा देते थे, क्योंकि पहले बैंक नहीं थे, पैसे वाले लोग ही कर्जा देते थे। So his father was quite rich, and he would give monies to a lot of developers and a lot of other industrialists. In those days, there weren't banks who would give loans, so there were money lenders. So he was quite a wealthy money lender. जब स्वामी जी महाराज जी के पिताजी गुजर गए, स्वामी जी की उम्र बड़ी लंबी नहीं थी, 20-21 साल की। तब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं ब्याज बट्टे का काम नहीं करना चाहता, जो लोगों ने भी पैसा लिया है 6 महीने का समय देते हैं, वो ला के वापस कर दें। So his father died when Swamiji Maharaj was quite young. He was about 20, 21 years old when his father expired. So he announced after that he did not want to continue with the money lending business, and he told everybody, all the borrowers, that they should return the money if they can within 6 months, and that he was not going to be extending any further monies. तो पहले के लोग अच्छे थे और न्यायिक थे, बहुत सारे लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं भी दिया, तो स्वामी जी महाराज उन्हें माफ कर दिया। So in those days, there was honesty in business and dealings, and most of the borrowers paid back the monies. There were some who did not pay also, and their loans were they were allowed that by Swamiji Maharaj. तो उन पैसों से ही स्वामी जी महाराज ने, घर से काफी दूर था, 100 एकड़ जमीन लिया और वहां आम का बगीचा लगाया, जहां जो भी पीले कपड़े वाले नाम लेते थे और साधु महात्मा आते थे जो भजन करना चाहते थे, तो उनको खाना वाना दे के भजन बिठाते थे। वो बगीचे में लोग, साधु लोग भजन बैठते थे। Thereafter, with that money, he bought about 100 acres of land, and there he planted mango trees, made it a mango grove, and then he would allow uh, various people who would come and get initiated and sit for meditation. He would arrange for the food for these people and allow them to sit in meditation in that mango grove. तो कहते हैं बाद में वही स्वामी बाग के नाम से फेमस था, और बाद में बंटवारा हो गया, 2 भाग हो गए, और एक भाग दयाल बाग और एक भाग स्वामी बाग रह गया। So that place was better known as Swami Bagh, and later that Swami Bagh was divided into two, Swami Bagh and Dayal Bagh. हाँ, तो कहते हैं कि इस तरह से परमात्मा अपने प्यारे बच्चों को, मानो बने बनाए आत्माओं को ऊपर से भेजते रहते हैं। संत हमेशा दुनिया में मौजूद रहते हैं, कहीं गुप्त और कहीं प्रकट। So that way, saints come into this world. God Almighty sends souls into this world, and many ready-made souls come into this world and become saints here. संतों से ये दुनिया खाली नहीं रहती,
कबीर साहब ने भी इशारा दिया है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। So saints are always there in this world. There is never a time where there is no saint in this world. Kabir Sahib has said that if there were no saints in this world, then this world would burn and perish. तो कहते हैं संत हमेशा दुनिया में रहते हैं, आगे भी रहेंगे। कुछ प्रकट होते हैं, कुछ गुप्त रहते हैं, जिनको उनके जीवन काल में गुरु ने हुक्म दिया सत्संग करने का, नामदान देने का, या तो भजन करके सतलोक जाते हैं, सतपुरुष भी हुक्म देते हैं, तो वही लोग बाहर प्रचार करते हैं। और जो सतलोक सचखंड जाके भी जिनको बाहर ही अपने सदगुरु का हुक्म नहीं, देहधारी और सतपुरुष का भी हुक्म नहीं, तो ऐसे लोग गुप्त में रहते हैं, वो खुश रहते हैं। उनको अपनी कोई इच्छा नहीं होती है कि हम किसी को नाम दें, प्रचार करें, और वो रात दिन अपने पिता परमात्मा सतपुरुष से दर्शन में, आनंद में पड़े रहते हैं। So saints are always there in this world. Some saints preach this path, preach Santmat, and some remain hidden. Masters who are instructed by their masters, or when they are instructed by God Almighty Himself, by Satpurush, they preach outside, and they talk about the teachings of Santmat and help others. And then there are saints who have gone within and who are in contemplation of their masters and God Almighty, and they are happy in that because they have not been instructed by either their masters or by God Almighty to extend any or to do the preachings outside. So they do not make any disciples, and they are happy in the contemplation of God Almighty. तो कहते इस तरह से संत दुनिया में हमेशा रहते हैं। तो संतों से ये दुनिया कभी खाली नहीं रहती है, इसीलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। एक जाता है, दूसरा आता है, ये ऐसे ही पहले से चलता रहा और आगे भी चलता रहेगा। So saints are always there in this world. There is never a time when there is no saint in this world. In the past also saints have kept coming in this world, and in the future also saints will keep coming in this world. Therefore we should not be worried that there will be no saints, or there are no saints, or there will be no saints in the future. क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं हमें तो नाम मिल गए, बाल बच्चों का क्या होगा, वो छोटे हैं, आगे क्या होगा, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। हम सब की चिंता वो ऊपर पिता बैठा है, उसको है। वो जरूर जैसे आपका उद्धार किया उसका भी, उन लोग का भी उद्धार करेगा। Many times we are worried that we have been initiated, but what will happen of our children, and who will give them initiation later? But we should not be worried like that, because God Almighty is taking care of all of that. And just as He has given you initiation and taken care of you, He will also take care of them. जिसको जिसको चिताना है, अपने में मिलाना है, वो परमात्मा जरूर उसे अपने पास बुलाता है, अपने प्यारे बच्चों के, संतों के पास भेज के, और उनके जरिए अपने पास जरूर बुलाता है। So, whoever God Almighty wants to awaken and bring to Himself, He always brings those souls in connection with the masters. तो इसीलिए चाहिए कि हमें भजन सुमरन से लगाव रखना चाहिए। भजन सुमरन पे विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें अपने आत्मा की चिंता होनी चाहिए, आत्मा फिर इस दुख में न जाए। So we should be worried about ourselves. We should be worried about our bhajan simran and about our own soul, so that we get the deliverance in this life itself. तो समय बहुत अच्छा है, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। हम आंख बंद करके सुमरन और ध्यान से जुड़ें। So the time is good, and the atmosphere is quiet, and we should make the most of it. Let us close our eyes and sit for meditation.